स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। ओके, आज हम जीपैट का जो ड्रग एक्टिंग ऑन हार्मोनल सिस्टम है, ओके, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन हार्मोनल सिस्टम। सो प्रीवियसली जो था हमने 103 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था इसी ड्रग एक्टिंग ऑन हार्मोनल सिस्टम में। आज हम 104 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। इतना मतलब डेप्थ में, जिस तरह से मैं डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करता हूँ उस तरह से मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। एक जस्ट ओवरऑली रीड टाइप का होगा। ठीक है, Bromocriptine is indicated in the following condition. Bromocriptine is indicated in the following condition except prolactin deficiency. Which of the following is preferred for infertility treatment of a female with increased prolactin level? Bromocriptine 105D. Females with secondary amenorrhea with serum prolactin level 75 mg per ml is to be treated with 106 ये है गला तमरा A, that is called to cabergoline. Female with secondary amenorrhea with serum prolactin level 75 mg per ml is to be treated with cabergoline. Cabergoline is used in 107C acromegaly, hyperprolactinoma. C is your correct answer. One of the following statement is not true. इनमें से कौन सा statement true नहीं है? C. T4 is completely converted to T3 in peripheral tissue. Which statement is true? For the regulation of prolactin secretion? Which statement is true for the regulation of prolactin secretion? Which statement is true for the regulation of prolactin secretion? Which statement is true for the regulation of prolactin secretion? कौन सा? Which statement is true for the regulation of prolactin secretion? 109. A. Estrogen stimulate prolactin secretion. Which is the most common primary pituitary cause of hyperprolactinemia? Which is the most common primary pituitary cause of hyperprolactinemia? B. Prolactin secreting adenoma. Thyroid and antithyroid drug. Which thyroid hormone is secreted from the interfollicular cell? Which thyroid hormone is secreted from the interfollicular cell? Thyroxine T4, triiodothyronine T3, calcitonin, all of the above. So 111 ये है जो C, calcitonin. The thyroglobulin molecule which stores the thyroid hormone contain dash percentage sugar, 10%, 20%, 30%, 50% sugar. The thyroglobulin molecule
which stores the thyroid hormone contain dash percentage of sugar. 1 and 2. A, 10% sugar. During pregnancy, amount of thyroxine binding to the globulin decreases, increases, remain constant, none of the above. 113. B, increases. 113. B, increases. Orally active hormone is TSH, thyroxine, GH, prolactin. 114. B, thyroxine. L-thyroxine is used in thyroid storm, creatinism, toxic goiter, Graves disease. 115 ये ହେଇଗଲା ତମର B, creatinism. All of the following are rare but serious. All of the following are rare but serious fatal side effect of thioamides group of anti-thyroid drug except agranulocytosis, liver toxicity, aplastic anemia, lung fibrosis. All of following are rare but serious fatal side effect of thioamide group of anti-thyroid drug except होची कोटा 116. D, lung fibrosis. Which of these is not a symptom of iodism? Which of these is not a symptom of iodism? 117. A, dryness of mouth. Which of the following statement is false regarding thyroid hormone? Which of the following statement is false regarding thyroid hormone? Congenital deficiency result in creatinism. Its receptors are located on the cell membrane. Increased basal metabolic rate T3 and T4 causes hyperdynamic state of circulation. So 118 ହେଇଗଲା ତମର B. 118 B. Its receptors are located on the cell membrane. Sometimes the thyroid symptoms are mistaken for which condition? Sometimes the thyroid symptoms are mistaken for which condition? Menopause, post-traumatic stress, pregnancy, Crohn's disease. 119. A, menopause. Medication for hypothyroidism include treatment that replace insulin, replaces ADH, replace TH, replace surfactant. 120. C, replaces TH. Which of the following is not the symptom of hypothyroiditis? Which of the following is not the symptom of hypothyroiditis? 121 ये ହେଇଗଲା A, accumulation of urea in the blood. In chronically deficient patient, this abnormality is directly related to the enlargement of a thyroid gland. In chronically deficient patient, this abnormality is directly related to the enlargement of the thyroid gland. Impaired conversion of T3 and T4, reduced activity of thyroperoxidase, elevated level of TSH, an antibody that binds to the TSH receptor in the thyroid gland. 122. C, elevated level of TSH, which encloses thyroid responsible for its movement during swallowing. 123. B, pretracheal fascia. This condition of chronic inflammation of thyroid leading to underactivity is 124 कितना हो जाएगा? A, thyroiditis.
Deficiency of dietary iodine will cause the following except deficiency of dietary iodine will cause the following except 125D, that is called to toxic goiter. Which of the following drug is an inhibitor? Which of the following Which of the following drug is an inhibitor of iodide trapping by thyroid? Which of the following drug is an inhibitor of iodide trapping by thyroid? Methimazole, carbimazole, potassium perchlorate, propyl thiouracil. 126C. Potassium perchlorate. Perchlorate. The function of enzyme peroxidase in thyroid gland include the following: oxidation of iodide into iodonium, trapping of iodides from blood into the thyroid gland, releases of thyroid hormone from thyroid gland in circulation, deiodination of T4 to T3. So 127. A. Oxidation of iodide to iodonium. 127. Okay. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Acromegaly is a disorder of a pituitary gland. Addison disease is one of the thyroid gland disorder. Hypothyroidism is low level of T3 and T4. Simond disease is a adrenal gland disorder. 128. B. Addison disease is one of the thyroid gland disorder. Which of the following statement is true? So Addison disease is one of the thyroid gland disorder. Thyroid gland disorder हेले Addison disease हुए. All can cause hypothyroidism except. हर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है लेकिन कौन नहीं है? 129. 129 बी. कैप्टोप्रिल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज नहीं कर सकता है लेकिन कौन कर सकता है? पास आपका कर सकता है, लिथियम कर सकता है, अमियोडारन भी कर सकता है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू थायोअमाइड anti-thyroid drug is true. They inhibit uptake of thyroid hormone. Methimazole is a prodrug. They inhibit enzyme peroxidase. Propyl thiouracil promotes peripheral conversion of T4 to T3. 130. C. They inhibit enzyme peroxidase. The following statement regarding methimazole is true. It is a goitrogen. It inhibits trapping of iodide by thyroid gland. It has very rapid onset of action. It is preferred over propyl thiouracil in thyroid storm. 131. A. 131. It is a goitrogen. Endostyle of amphioxus is similar to parathyroid, thyroid, thymus, thalamus. 132. A. Parathyroid. Use of radioactive iodine. 131 include the following except pre-operatively in पता नहीं क्या लिखा है, thyroid storm or pre-operatively into nodular goiter, thyroid storm, endemic goiter, definitive therapy in Graves' disease. Okay, 133. D. Definitive therapy in Graves' disease. ठीक है. यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन इंक्लूड द फॉलोइंग. रेडियोएक्टिव आयोडीन का जो यूज होता है वो सब
हो सकता है लेकिन कौन नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटिव थेरापी इन ग्रेव्स डिजीज में आयोडीन 131 का रेडियो एक्टिव का यूज नहीं होता है। कहाँ पर यूज होता है? प्री ऑपरेटिवली इन नोडुलर गॉइटर में यूज होता है, थायराइड स्टॉर्म में यूज होता है, एंडेमिक गॉइटर में यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीथायराइड ड्रग शोज ओल्फ चेकऑफ इफेक्ट? चेकऑफ इफेक्ट: प्रोपाइल थायोरासिल, रेडियोएक्टिव आयोडीन, लुगास आयोडीन, कार्बिमाजोल। 134 134 ये डी सी लुगल्स आयोडीन। fastest acting antithyroid drug with rapid development of a tolerance is 135 C potassium iodide. The clinical use of radioactive iodine include the following except हो जाएगा 136 A hyperthyroidism in young married female. The following statement pertaining to radioactive iodine are true. 137 D. Maximum improvement in hyperthyroidism requires 3 to 6 months with this treatment. Pre-operative management of subtotal thyroid thyroid detect thyroidectomy include all except 138 D. Radioactive iodine. Carbimazole diminishes thyroid function by 139 C. Inhibiting coupling of iodothyronine. प्रोपाइल थायोयूरासिल इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं होता है? 140 डी. Agranulocytosis caused by methimazole. Advantages of propyl thiouracil over radioactive iodine is 141 D. Safe in pregnancy. 141 D. Drug of choice for the treatment of hyperthyroidism in pregnancy is 142 propyl thiouracil. Which of the following antithyroid medication had the maximum chances of causing agranulocytosis? 143 143 C. Propyl thiouracil. 143 C. Female of carbimazole therapy present with sudden fever, rigors and sore throat. Which is the investigation of choice for this patient? Check blood count, check C reactive protein, take throat swab, treat for malaria. 144 A. Check blood counts. In treatment of a papillary carcinoma thyroid, radioiodine destroy the neoplastic cell predominantly by 145 145 आपका हो जाएगा बी बिटारेज. ग्रेव्स डिजीज और बेस्डो डिजीज इज ड्यू टू 146 सी हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. 146 आयोडीन यूज्ड इन थायराइड डिजॉर्डर नॉट ट्रू. आयोडीन यूज्ड इन थायराइड डिजॉर्डर नॉट ट्रू. इनमें से कौन ट्रू नहीं है? 147 बी contraindicated in hyperthyroidism. The four small gland in the thyroid gland are known as the four small gland in the thyroid gland are known as 148 C parathyroid gland.
The first line antithyroid drug is methimazole, and the antithyroid drug which is safest in pregnancy is propylthiouracil. Which among the following is the fastest acting antithyroid drug? 149. 149. A. Sodium iodide. Fastest acting antithyroid drug. Iodide of sodium potassium. Fastest acting antithyroid drug. Iodide of sodium oblique potassium. सो आज 150 जाके क्वेश्चन आम सल्व करदे बर्तमान टिके मेडिसिन को देखिए कारण सबुआड़े भाग माप कर पकेबा पड़ुଛି मेडिसिन सो आज एक मेडिसिन के बारे में कोशिश करेंगे डिटेल में पढ़ने के लिए ठीक है ना वो मेडिसिन है हाइड्रोक्सी यूरिया ठीक है हाइड्रोक्सी यूरिया हाइड्रोक्सी यूरिया
hydroxyurea also known as hydroxycarbamide, also known as hydroxycarbamide, hydroxyurea, also known as hydroxycarbamide, is an anti-neoplastic agent, is an anti-neoplastic agent, is an anti-neoplastic agent indicated for the treatment indicated for the treatment of resistant chronic myeloid myeloid ल्यूकेमिया। सो इसे बोला जाता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, CML, फॉर द मैनेजमेंट इन कॉम्बिनेशन विथ केमो रेडिएशन थेरापी। CML, अरे क्या हुआ इसको, फॉर द এইটা কোন আসছে ফালতুটা যে for the management in combination with chemoradiation therapy, in combination with chemo radiation therapy, in combination with chemo radiation therapy of locally advanced squamous cell head and neck cancer, excluding lip cancer, and for the management of sickle cell anemia, and for the management of sickle cell anemia, to reduce the frequency of a painful crisis and to reduce the need of a blood transfusion in patient with recurrent moderate to severe painful crisis. Okay, sickle cell anemia, to reduce the frequency to reduce the frequency of a painful crisis and to reduce the need
the need of a blood transfusion in patient with recurrent in patient with recurrent moderate to severe MODE moderate to severe painful crisis नाउ अडल्ट डोसेज की बात करेंगे. डोज शुड बी बेस्ड ऑन आइडियल फॉर actual body weight whichever is less. Doses should be based on ideal or actual body weight whichever is less per manufacturer. Prophylactic administration of folic acid is recommended. Okay, now coming to the adult dosage. So prophylactic administration of folic acid is recommended. Prophylactic administration of folic acid is recommended. Chronic myeloid leukemia. So condition क्या हो जाएगा? Chronic myeloid MYELOID leukemia. Chronic myeloid leukemia. route of drug administration oral हो जाएगा. कैप्सूल फॉर्म में ये आता है 500 mg का. इनिशियल जो डोज हमको देना पड़ेगा, इनिशियल डोज 40 mg per kg per day. reduce initial dose for thrombocytopenia. ओके, इनिशियल डोज हमें देना पड़ेगा 40 mg per kg per day. reduce dose for thrombocytopenia. कितना रिड्यूस करोगे? 20 mg kg per day. If WBC count is less than 2000 millimeter per cube per day हो गया. If WBC count is less than 2000 per millimeter cube. Further individualized dose on the basis of WBC count. Further individualized dose on the basis of WBC count. हेड एंड नेक कैंसर के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हेड एंड नेक में कैंसर अगर होगा
उस क्षेत्र में डोज हो जाएगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रहेगा। कैप्सूल के फॉर्म में आता है 500 mg का, ठीक है। तो 1000 mg देना पड़ेगा एवरी 12 घंटे फॉर 11 डोजेस पर साइकिल in combination with continuous infusion, fluorouracil and radiation therapy. So 1000 mg देना पड़ेगा, 1000 mg every 12 hour, every 12 hour for 11 doses per cycle, for 11 doses per cycle in combination with continuous infusion of किसका, फ्लूरोयूरासिल and radiation therapy. Individualized treatment regimen on the basis of tumor type, response and current clinical practice standard, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा। तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये जनरली आपका आ जाता है 200 mg फॉर्म में भी आता है, 300 mg फॉर्म में भी आता है और 400 mg ये भी आता है। इनिशियल डोज आपका 15 mg पर kg पर डे एज ए सिंगल डेली डोज। सो इनिशियल डोज आपको जो देना पड़ेगा वो हो जाएगा आपके लिए 15 mg पर kg पर डे एज ए सिंगल डेली डोज, एज ए सिंगल डेली dose. Monitor blood count every 2 weeks. If blood counts are within the acceptable range, dose may be increased by 5 mg per kg per day every 12 weeks until the maximum tolerated dose of 35 mg per kg per day is achieved, or until the dose that does not produce toxic effect over 24 consecutive weeks. Do not increase dose if blood count are between acceptable and toxic range. ठीक है। और क्या क्या इसमें खतरा है? मॉनिटर ब्लड काउंट एवरी 2 weeks. मॉनिटर blood count every 2 weeks. If blood counts are within the acceptable range, if blood count are within the acceptable range, dose may be increased by dose may be increased by 5 mg kg per day
every 12 weeks until the maximum tolerated dosage of 35 mg kg day is achieved. ACHI is achieved, or until the dose or until the dose that does not produce toxic effect, or until the dose that does not produce toxic effect over 24 consecutive weeks. Do not increase dose if blood count. Don't increase the dose if blood count are between acceptable and toxic range. ये कैप्सूल फॉर्म रे आସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଟାବଲେଟ ଫର୍ମ। ସो ଟାବଲେଟ ରେ ଆମର ଆସୁଛି 100 mg ପାୱାର ର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 1000 mg ପାୱାର ର। सो इनिशियल डोज आपका 25 केते एटा 15 होतला एठे 20 हो। सो इनिशियल डोज जो हो जाएगा वो 20 mg पर kg पर डे, एटा सिंगल डोज। Monitor blood count every 2 weeks. If blood count are within an acceptable range, dose may be, if blood counts are within an acceptable range, dose may be increased by 5 mg per kg every 8 week। है ना, जदि acceptable range रे रहे blood count टा ताले 5 mg per kg per day आप कर सकते हो कितने, एवरी 8 वीक, एवरी 8 वीक के बाद। और इफ पेनफुल क्राइसिस ऑकर अनटिल माइल्ड माइएलो सप्रेशन मतलब एनसी 2000 से लेकर के 4000 मिलीमीटर क्यूब is achieved or up to a maximum dose of 35 mg per kg per day। if blood counts are within the toxic range, जदि blood count रा toxic range भितर आसुची, discontinue until hematologic recovery। following hematologic recovery, restart with the dose reduced by 5 mg per kg per day। dose may be titrated upward and downward every 8 week in increment of 5 mg per kg per day until a stable dose with no hematologic toxicity for 24 week is achieved। discontinue permanently if hematologic toxicity develop twice। acute
माइलॉइड लिकोमिया AML साइटो रिडक्शन ऑफ लेवल ओरल में 50 ରୁ ନେଇକରି 100 mg kg per day until WBC is less than 1 lakh per millimeter cube और 50 to 60 mg kg per day until WBC count आपका 10,000 से लेकर के 20,000 मिलीमीटर क्यूब। सो आज के स्टडी ब्लॉग में इतना ही। अभी रात का बज रहा है टाइम 3:52। ओके, सो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी उतना एनर्जी नहीं। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी एडिटिंग किया है एंड उसके बाद थोड़ा हमने फार्माकोलॉजी का 50 MCQ आज सॉल्व किया। 50 तो होगा नहीं, शायद 2-3 कम होगा। 47 या 46 क्वेश्चन आज हमने ख़त्म किया। उसके बाद हाइड्रोक्सी यूरिया का थोड़ा वो जाना, हाइड्रोक्सी यूरिया कहाँ कहाँ पर यूज होता है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है। सिकल सेल एनीमिया में भी यूज होता है। एक्यूट माइलॉइड लिकोमिया में यूज होता है। साइटो रिडक्शन में यूज होता है, हालांकि ऑफ लेवल होता है। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। एक्यूट माइलॉइड लिकोमिया, साइटो रिडक्शन, ठीक है, ऑफ लेवल। नाउ आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में जाना। सिकल सेल एनीमिया के ऊपर पढ़ा। हेड एंड नेक कैंसर में क्या डोज होता है वो हमने जाना। क्रोनिक माइलॉइड लिकोमिया के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, मतलब कैसा उसका डोज होता है। ठीक है, एंड उसका ब्रांड नेम में बहुत सारे आते हैं। सो ब्रांड नेम डिस्कस करेंगे किसी और एक दिन में। ठीक है, जनरली उसका जो डोसेज फॉर्म जो आता है वो कैप्सूल में आता है एंड उसका स्ट्रेंथ 500 mg होता है, 1000 mg भी होता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। सो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड अगेन मैं बता दे रहा हूँ, रात का 3:54 हो रहा है। अभी सोने के लिए जाऊँगा। ठीक है, अभी बॉडी में उतना ऊर्जा भी नहीं है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।